So we are going to, so today's class we are going to see eigen value problem for Lz and Lz square. So we are going to repeat हम जो कल किया था हमने we had a particular combination of J and J square and try to relate them. So in the today's class we are also going to see how we can have eigenvalues of these functions which are being operated upon by these angular momentum operators Lz and Lz square and or eigenvalue problem for these two quantities. So conventionally हमारे पास if we want to have for example so we are talking of angular momentum but we are talking of angular momentum it may be coordinate specific cylindrical spherical or paraboidal or any other coordinate system. So before we can relate, so x is equal to or sine theta cos phi, y is equal to or sine theta sine phi, and z is equal to or cos theta. And जो इसका for example gradient operator हम इसको we can also write the gradient operator as, because we have to come to angular momentum operator. How we can, so then we can relate it here. So before that we are going to write the gradient operator, which is written as d by d phi r plus theta d by d theta. Now r can be written as sine theta cos phi sine theta sine phi cos theta z, and this is r phi and theta. Phi can be written as sine phi, this is unit vector, cos theta y, and theta. So if there are r theta and phi coordinates, we can first write them the way we write them: cos theta sine phi y coordinate, so sine theta z coordinate. So you have to see how the angular momentum operator will see in this sense. Now the question is verify the subsequent problem which he is saying. So if we can write it figuratively, so verify 11.3. So 11.3 is this one. So we have to verify 11.3. 11.3 is, so we have to verify this, how we define angular momentum operator as this. So we have to verify this thing, how we can verify. So to verify it, we can say that we know a function. If we want to write it as a gradient of this thing, we can see a differential change in this function can be dot product of this line element and gradient of this function. You can write it at like this. So infinitesimal change in dr dot product of this is this we know it from our there. If we have spherical polar coordinates or phi and theta fixed, so the angular momentum can be expressed as Lx can be expressed as h by iota. So we're coming to this angular momentum operator in position coordinates as well as in momentum coordinates. So we'll just take it in position coordinates, it's h by iota. It can be expressed as minus sine theta d by d theta minus cos of phi quad theta d by d theta.
So we can write it as an angular momentum operator. Can be written as like this. And Ly can be written as cos of phi d by d theta minus sin theta cot phi d by d phi. In the same way, Lz can be written as. So now if you see it the way we have written yesterday, J is equal to Jx square plus Jy square plus Jz square. In the same way we can have L square can be written as Lx square plus Ly square plus Lz square. So you can write it as. But the question is we are going to straight away write result. जिस तरह हमने कल वो प्रूव किया था ना that for a particular definition of operators where j square and lambda is greater than or equal to m square, it was to be shown, but we had taken operator j and j square. दो ऑपरेटर्स लिए थे हमने correspond to a given eigen function and उसके eigen values were j and d square. So and we had a particular definition of commutation operators, commutation relations, and we try to verify it. So in the same way we have to see how we can do it for this exercise. Such that so if I just so we have to so if it's equivalent to this thing. So how we arrive at this thing? It's again an exercise which we have, which we are supposed to do. So what we are going to do is how we can using these definition of operators and either one is used straight away, substitute them here and try to see whether it's equivalent to this thing or not. The other thing is that, for example, if we want to continue our discussion that जो spherical coordinates हमारे पास हैं, spherical coordinates representation which can be advantageous for treating eigenvalue problem. Lz phi of phi can be written as so for spherical polar coordinates we can write it as mh of phi in that representation. So where m is normally integers, but here we can say m can be any of the eigenvalues which is associated with this angular momentum operator operating on this coordinate. And normally जो इसके values होते हैं m की they will come out to be in जिस तरह हमारे पास था n plus 1 by 2, that's 1 half, 3 by 2, 5 by 2, so on and so forth. Such that, but since we are not restricting to half integers, we'll restrict to integrate integers. जिसका classical solution है, once how we solve it, it comes out to be as e to the power iota m phi. And जो eigen functions हैं, eigen functions, because we are interested in eigen functions of just like we had j and j square yesterday. Today we have eigen functions of lambda and this Lz square. So eigen functions of L and L square and eigen functions of L and L square must be y of theta phi, phi of phi, theta of theta. So the question is what conditions must we impose on the solution? What functions must we impose? So we have, just like we have any differential equation, here y is dependent upon phi and theta, and phi is the one of the solutions which we impose and which is supposed to be the eigenvalue of L or L square. So if we use y dependent upon theta and phi,
and one of its solutions, which gives the eigenvalue solutions, eigenvalue. Supposedly this time integers only. So question is, what what conditions must be imposed for physically acceptable wave functions. So what are the physically acceptable wave functions which it's going to have? Because if we have e to the power iota m phi, तो इसका आएगा cos phi plus sin of, so you will have phi varying from 0 to pi. So for 0 it may be maximum, and for pi by 2 it will be maximum. It will go from 0 to 1, minus 1, so on and so forth. So phi, the value of phi may go from phi to phi plus 2 pi repeatedly. So it's going to increase, so on and so forth. Such that if we have boundary conditions, the boundary imposed boundary conditions are phi plus 2 pi is equal to phi of phi, where phi is e to the power iota m phi, and m can have value 0, plus minus 1, plus minus 2, so on. But यहाँ पर हमारे पास ये है कि yesterday we had the solutions of those operators operating on these eigenstates. The eigenvalues came out to be odd and integers, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, so on and so forth. So here it's integers, so you can say, अब ये कि we can also get odd integers हमारे पास, and which are the half integral values of m, which seem to be unacceptable eigenvalues of the component orbital angular momentum, but they can be admissible under different kinds of angular momentum. For example, angular momentum commutation relations which satisfy. So if we read isospin and etc. So satisfying angular momentum commutation relations. फिलहाल हम इसको ऐसे लेंगे. So these solutions can also are admissible for this thing. Normally, m is associated with the magnetized solutions, magnetized values. Now we are going to see जो हमारा ये discussion है in the context of how we can see it as a solution of Legendre's equation, Legendre's polynomials. So if you might have studied Legendre's polynomials, the solutions of different differential equations, Legendre, Hermite, Lejeune, Bessel. These are different. So these all the solutions of these differential equations, sort of here, particularly in the solution of Schrodinger equation or in this eigenvalue problem, the solution of Legendre's solution or Legendre polynomial, it carries some significance, or it has what I could say relevance in how we can have this angular momentum operators Lz and Lz square. So you can have, once we solve Legendre polynomial, उसके जो coefficients हैं, they can be those one of the coefficients can have map here. So how we can have map here? We can just see it. So for example, if we see exercise 11.5, so for Cartesian coordinates Lz, it's equal to
So eigenvalue problem for L square can be, so this is for simple algebra units operator, angular momentum operator. But for L square, if we want to write L square in terms of y and theta, we can write it in terms of जो हम अभी कर रहे थे, sin square theta d2 by d5 square plus 1 by sin theta d by d theta y of theta phi is equal to h square lambda y theta phi. So you can see yesterday's solutions. एक तो ये था हमारे पास j कल था lambda and j square. तो here it's lambda h square lambda. And if you solve it further, you can say you can write it. We require this. If we substitute 52 to 51, 52 to 51. If we substitute this, 52 is equal to phi of theta, phi of phi. So इसको आप यहाँ substitute करो, ठीक है? But for L square as a differential equation, it will take this form. It will take this form: d by d theta sin theta this d theta minus m square by sin square theta plus lambda phi. Again, we are going to do some simplification. Simplification है zeta is equal to cos of theta and f of zeta is equal to. So you can further simplify it as a part of some differential equation. Zeta को cos theta के बराबर रखो और f को रखो आप बराबर इसके. So this equation can further be rewritten. So what we are doing basically, we are जो हम कल कर रहे थे ना solutions, eigenvalue solution for j square, ठीक है? We got a particular eigenvalue. So today's class we are going to do eigenvalue problem for Lz and Lz square. So what we are going to use, we are going to use spherical polar coordinates हम use करेंगे. So spherical polar coordinates में use करते हुए there's a particular differential equation. So Lz का form ये angular momentum operator है. So you have r theta phi. So basically हमारे पास जो equation है it will come out to be like this. So हमारे पास जिस तरह हम कल कर रहे हैं ना x square, ly square, lz square. अब मसला हमारे पास ये है कि so this is a particular differential equation, इसका form है, ठीक है? तो Lz का form तो है, this is angular momentum operator, ठीक है? But we are interested in also L square as an angular momentum operator. जिस तरह हमने कल किया था J and J square. They were two states, but उनका eigenvalue same आता. J operating on state side, J square operating on state. They gave the particular eigenvalue. अब उसको हमने कल as a solution किया. In the same way today we have to also do Lz and Lz square. But how we are going to do it? We are going to take recourse to जो आपने differential equations आप पढ़ी होंगी, Hermite, Bessel, पढ़ा है, Legendre, है ना? These are different polynomials. उनके solutions, how we can solve. And उनके solutions आते हैं spherical coordinates, polar coordinates, elliptical, whichever coordinates. क्योंकि आप angular momentum है ना, things is rotating. अगर spherically rotate कर रहा है, elliptically rotate कर रहा है, so at a given point, and quantum mechanics we have to operator L. L की normal form क्या है? शाबाश, in the quantum mechanics, we have angular momentum operator को हम को देखना है. But here L की angular momentum operator is this, ठीक है? Lz.
जिस तरह हम कहते हैं ना ऑपरेटर एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स वाई पी एक्स माइनस पी एक्स वाई, इट विल नॉट बी जीरो, इट विल बी समथिंग, ठीक है, आयोटा एच कुछ। अगर एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स दैट विल बी जीरो फॉर नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, वो हमको देखना है। तो वी हैव टू सी एज जेड, है ना, एज अ क्वांटिटी, दिस इज एक्स डी बाई डी एक्स, दिस इज वाई, सो इट्स नॉट नेसेसरी इट विल बी जीरो, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल जेड निकालना हमको एल जेड स्क्वायर इन दो को निकालना है, एल जेड का भी निकालना है, एल जेड स्क्वायर। सो ऑपरेटर जब निकालोगे तो कभी तो ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन सम स्टेट दैट विल गिव अस आइगन वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटर्स एल जेड एंड एल जेड हाउ कैन कैलकुलेट, हमारे पास एक वी आर गोइंग टू यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें एल जेड का ये कंपोनेंट्स इसका सॉल्यूशन ऐसे आएगा MH5। अब इसमें आते हैं इट्स फॉर यू कैन सिंप्लीफाई इट, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है कोई भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ये इट्स फॉर आयोटा M5 आएगा, सो इट विल बी M के डिफरेंट वैल्यूज लीजेंडर सॉल्यूशन। अब नॉर्मली ये है कि जो हमने कल वैल्यूज निकाले वो हमने इंटीजर्स में निकाले, 0, हाफ, 3/2, 5/2, है ना। बट हेयर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास एडमिट सॉल्यूशंस करते हैं, दे आर ओनली इंटीजर वैल्यूज, तो हाउ कैन एड्रेस इट, ठीक है। हम यहाँ फिलहाल कहते हैं कि वी कैन एड्रेस दोज वेरी थिंग्स आल्सो, देयर आर सम क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज आइसोस्पिन एंड अदर थिंग्स, वी कैन फिलहाल हम इंटीजर सॉल्यूशन वी कैन कम टू दैट सॉल्यूशन आल्सो। अब जो फॉर एग्जांपल एल स्क्वायर वाई है, सो वी कैन अराइव एट दिस, this is what I should say, solution of Legendre polynomial for this h square lambda. H square lambda is for this जो कल का, so for this part of this, एक angular momentum कल हमने j किया था, फिर j square किया, ठीक है। So if it's on the right hand side, we can now it's boils down ultimately to solving the differential equation. So you are trying to solve eigenvalue problem by it takes the form of a Legendre polynomial, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। So that's it. Why Legendre polynomial? Because हमने जो फंक्शन है ना phi, ये है ना angular momentum, तो it can either be expressed as spherical coordinates, cylindrical coordinates, elliptical, तो spherical coordinates है ना phi पैरामीटर या r theta phi, है ना, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी इन टर्म्स ऑफ phi theta you can write it like this, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को इन दिस कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। सो अब यहां तक हम पहुंचे। नाउ अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो द इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन जीटा को cos थीटा के बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे। The equation will simplify like this: 1 minus zeta square d by d zeta plus lambda f is equal to 0. ठीक है। So I'll recommend you before trying to see this thing from this book or anywhere, you first थोड़ा सा इसका रिहैश आप करो, आपको फंक्शंस है ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, लीजेंडर पॉलिनोमियल, बेसल पॉलिनोमियल या लीजेंडर पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू साथ साथ उसको देखो, देन यू कंपेयर, बिकॉज लीजेंडर पॉलिनोमियल इज अ टूल टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। इट शुड नॉट बिकम इम्पेडिमेंट। जैसे आपको बारिश में चलना है ना, आपको चलना है मगर आपको ये लगाना है, जूता लगाना है, हैवी जूता है बारिश में, सो दैट ताकि आपको चलना है ना। So you have to calculate something, but वो आपको it will help you. So that should not become, sometimes a tool becomes impediment. आपके पास you don't know these things. You have to solve angular momentum operator and other things. You don't know this thing well. So it's better to थोड़ा सा इसको rehash करो। Legendre equation की polynomial की solution क्या है and how we can relate the coordinates here with the angular momentum operator, solutions of angular momentum operator L and L square को कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब such that जो हमारे पास solution है, so in the same sense अब ये है कि इसमें जो जीटा है ना,
जीटा के सॉल्यूशंस, जीटा गोज टू माइनस जीटा, इट डजंट मैटर, है ना, जीटा स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर भी जीटा ही आएगा वापस, है ना, माइनस ऑफ जीटा स्क्वायर। सो और थीटा गोज टू theta minus pi and z goes to z minus minus z, so it doesn't matter cos of theta यहाँ ना ये फाई, इसका अगर वैल्यूज है पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन ऑफ है ना पाई माइनस ये पाई वापस आएगा। नाउ इसका सॉल्यूशन, इफ यू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, इट विल कम आउट टू बी it will come out to be, for example, f of zeta, ये को अगर हम ऐसे लिखेंगे k goes to 0 to infinity, एक सीरीज बनेगी हमारे पास, we can write it in terms of some series, some expansion of this series, है ना, एक ही, फिर हम वो कोएफिशिएंट्स को सब, so the solution of इसका एक recursion formula, I am going to straight away write the recursion formula of this Legendre polynomial, जो relation आएगी, it comes out like this, k plus 2 ak plus 2 plus lambda minus k into k plus 1 into a of k is equal to 0। आप देखो, अब जो ak plus 2 है यहाँ पर एक ही है, सो ए के प्लस 2 डिवाइड बाई ए के, एक सबसे सॉल्यूशन आएगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के 0 1 ऑड और इवन वैल्यूज जो भी हमारे पास आएंगे, तो इट विल गिव पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा या के, ठीक है, सीरीज में, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। सो एन आइगन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर कौन सा, लैम्डा, है ना, तो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के को सब्स्टिट्यूट करो, उसमें हमारे को लैम्डा का वैल्यू आएगा, है ना, सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के ऑड और इवन रेशियो, इट विल गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर लैम्डा। लैम्डा मस्ट बी नॉर्मली नॉन नेगेटिव नंबर, हम कहेंगे नॉन नेगेटिव नंबर। अब इसमें रेशियो ऑफ ए के बाई ए के प्लस 2 है ना, ये इसका और इसका रेशियो, दैट इज बेसिकली लैम्डा के प्लस 1 बाई के प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस के इंटू के प्लस 1, ठीक है। तो अब यह है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एंड के प्लस 1 या दिस k and k plus 1 will give different values। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, a k plus 2 by a k लैंग्वेज ऑफ द बुक, k by k plus 2 such that k goes to infinity। अब हमारे पास we can have odd as well as even values of k, ऑड एज वेल एज, है ना, k0, k0 के लिए आएगा क्या, a2, ये आएगा k1, और फिर 2 डालोगे ये आएगा 4, ये आएगा 3, है ना। सो फॉर डिफरेंट ऑड वैल्यूज ऑफ और इवन वैल्यूज ऑफ k वी हैव दिस, हमारे पास रेशियो ऑफ दिस और दिस आएगा, दिस और दिस आएगा, दैट विल गिव अस अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c। अब what's the interesting thing which we are going to say? So if you see the series behaves like 1 by k zeta for even and odd values, implying that k जो होगा k will be k diverges logarithmically for zeta is equal to plus minus 1, ठीक है, और zeta किसके बराबर है,
हाँ, zeta is this. when you solve this इसका लीजेंडर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाला आपने यहाँ पर फॉर लैम्डा फॉर हाँ फंक्शन एफ को हमने लिखा किस फॉर्म में ए के यहां से हमने जीटा का वैल्यू निकाला ना ए के वैल्यू सॉरी यहां से हमने ए के निकाला है ना यहां से हमने ए के निकाला ठीक है ए के लिमिट कैन बी ऑड और इवन बट सीरीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है हमारे पास एफ जीटा इज इक्वल टू ए के जीटा बाय अब हमको बेसिकली जीटा का वैल्यू निकालना कि जीटा टू द पावर के 1 2 3 जो अब जब ये यहां ये आएगा ना ये 1 के जीटा के का जो सॉल्यूशन आएगा ना ए के इज बेसिकली व्हाट दिस के बाय के प्लस 2 तो इट कैन गो फ्रॉम इफ के गोज टू इंफिनिटी ठीक है एफ जीटा का क्या वैल्यू आएगा तो एफ जीटा का क्या वैल्यू आएगा सो इट मींस दैट द सॉल्यूशन विल टेक दिस फॉर्म 1 by k zeta to the power k for even and odd values of k ठीक है सो वी हैव डन नथिंग ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो अगर हम इसका निकालेंगे रिकर्सिव रिलेशन ये है in terms of ak plus 2 and ak ratio of ak and this is equivalent in terms of k this is the solution तो हम so rather than for some reason so we are going to have values ये theta and phi के values हैं theta and phi के values which में हमने लिया था theta is equal to 0 to pi तभी तो आ रहा था ना ये 1 आ रहा था प्लस 1 1 1 1 1 1 अब ये कह रहा है कि फॉर सम रीजंस वी आर एक्सक्लूडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कौन होते हैं ये वाले है ना अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 वेयर द कोएफिशिएंट्स आर 0 ठीक है बट इट टर्न्स आउट such singular for some which are singular solutions linearly independent solutions are singular solutions they are not acceptable for lambda अब ये कहते हैं कि we conclude that जो हमारी पावर सीरीज है इससे बेसिकली पावर सीरीज so the argument is bit थोड़ा सा इसका argumentation है ना इसमें आप going to find J square के solutions ठीक है solving this differential equations in terms of zeta को for this function ऐसे define किया but a के हम निकालते हैं यहाँ give even and odd values के solution in the form of this thing अब कौन से solutions ये accept करेगा जिस तरह हम basically eigen value निकाल रहे हैं which are the admissible solutions which are the जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां हम निकालते हैं k is equal to 1 and 2 कभी 0 0 निकलता है कभी 0 2 निकलता है ना कभी इमेजिन सो इन दिस व्हिच आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस के कौन से वैल्यूज फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स वी आर गेटिंग अब ये कह रहा है कि फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस दे कैन बी वी आर नॉट एडमिसिबल दे शुड वैनिश सो it happens for lambda ये कह रहा है lambda if k is equal to l जो solutions l is equal ये है कि ये वाले solutions if we have lambda is equal to l into l plus 1 where l जो है ना ये बेसिकली ये इसका solution कौन से solution से एडमिट करेगा it will be k into k plus 1 where k can be basically जो कल हमारे था angular momentum operator ठीक है so it turns out जो जिस तरह हमारे पास j स्क्वायर का ये था ना आइगन ऑपरेटर्स का इसकी थी ना लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2
2, इस 11+1, 11+3/2, 5/2, ऐसे करते करते ऐसे, है ना। अगर एनर्जी ऑपरेटर था, इसकी आगे वैल्यू है आती थी 1/2 फॉर n, 3/2, 5/2, है ना। सो इन द सेम वे once we solve this differential equation, these are the acceptable solutions, L into L plus, but they correspond to the angular momentum operator Lz square. ठीक है, so we have verified the thing. So it will only angular momentum will only admit solutions which will have solution basically k into k plus 1. So हमने k is equal to L कहा. So this is the thing. So इसी को कहते हैं हम orbital angular momentum quantum number. For L square it will be 0, 2h square, 6h square. So odd और even है ना, 1 ये 2 आएगा, फिर 3 आएगा, जो भी सॉल्यूशंस आएंगे. अब इसी का फर्दर ये है कि जिस तरह आप इफ यू रिमेंबर जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है ना, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इफ यू वांट टू राइट दिस एंटायर थिंग इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ पीएल लिखोगे ऐसे. आप देखना, आप कन्वेंशनली लीजेंडर पॉलिनोमियल ऐसे ही लिखते हैं हम, ऐसे L factorial dl by d zeta L zeta square minus 1 into L. ये zeta है ना, this zeta is basically this one, ठीक है, but it is going to admit these solutions ना. ये इसको लिखते हैं as a current series. जो इसका solution आता है for odd as well as even integers. जब हम PL को करते हैं ना, इसके P0, P1, P2, P3, इसके कोफिशिएंट्स हैं फर्स्ट फ्यू पॉलिनोमियल में, P0 क्या आएगा, इसको आप खुलाओ एक बार, तो इट विल बी 1. P3 ऑड के लिए ऐसे आएगा 1/2, 5 zeta square, 3 zeta. इसी तरह P1 के लिए निकालो आप, ठीक है, P2, P3, P4. So it turns out that PL cos theta जो हमारे पास one of the जो solutions है ना, that will give us the eigen function of Hermitian operator L square. ठीक है, one of them will give the so this is another way of saying the same. ठीक है, this is another way of saying. And another way of the same thing is कि जो ये if you have जैसे how we can orthonormality condition हम कर दे ना कि हाँ psi star psi is equal to 1. So if you want to write these Legendre polynomials which have solutions in terms of zeta, इसका orthonormality conditions, orthogonality conditions, again it will come out to be हमारे पास ऐसे if it's you have done it PL zeta PL prime zeta d zeta is equal to 0 for L is equal to L naught, and for L prime is equal to L it will be equal to 1. ठीक है, so we can arrive at orthogonality conditions or orthonormality conditions. कहाँ से? जो solution of this Legendre polynomials. But solution of Legendre polynomials जो हमारे पास के eigen value और eigen functions हैं, they one of them will constitute our angular momentum operator Lz square, Lz. ठीक है? So we have seen how we can write angular momentum operator. ठीक है? And how we can solve it in the spherical coordinate systems in the r theta phi parameter. ठीक है? You can have it. So in the next class we are going to see spherical solutions.